बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हम सोशल साइकोलॉजी के कंटिन्यू करते हुए उसके सेकंड लेक्चर को करेंगे और सोशल साइकोलॉजी ही के हवाले से जो है, जैसे कि आपको बताया गया था लास्ट लेक्चर में कि इट्स स्टडी ऑफ इंडिविजुअल विद रिस्पेक्ट टू इट्स ग्रुप मेंबर्स, ग्रुप्स और क्राउड बिहेवियर को स्टडी करना, और कोई भी ऐसा बिहेवियर जो कि सोशल कॉन्टेक्स्ट में हमारे हो, उसको हम जब स्टडी कर रहे हैं तो दैट कम्स इनटू द एरिया ऑफ सोशल साइकोलॉजी। बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक हमने पढ़ा था लीडरशिप, और उसके बाद उससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है आज का हमारा लाइकिंग एंड फ्रेंडशिप। आपके लाइक किसको पसंद करते हैं, क्यों पसंद करते हैं, कौन दोस्त बनते हैं, किस किस्म के दोस्तों को आप बनाना चाहते हैं। एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर प्लीज़ try to get awareness trip inside you कि आपकी अपनी पर्सनालिटी आपके दोस्तों से जो रिलेटेड है वो किस तरीके से आप अपनी अवेयरनेस में लेकर आए कि आप पर्टिकुलरली किस किस्म के ग्रुप में बैठना पसंद करते हैं, किस किस्म के दोस्तों को पसंद करते हैं, वो कौन सी क्वालिटीज़ हैं जो आपके दोस्तों में हैं। तो उसका क्या मतलब है कि आप किस चीज़ की तरफ फ्रेंड्स में अट्रैक्ट हो रहे हैं, कौन सी ऐसी बातें हैं जो आपकी दोस्ती का बायस बनती हैं। वेरी इंटरेस्टिंग लेक्चर और वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। इनफैक्ट आई होप कि मैं इसमें कामयाब हो जाऊं आपको इंटरेस्टिंगली नॉलेज डिलीवर करने में और इसमें आपका इंटरेस्ट डेवलप करने में। लेट्स सी कि लाइकिंग एंड फ्रेंडशिप क्या चीज़ है। वंस अगेन आपको लास्ट टाइम भी बताया था व्हाट इज सोशल साइकोलॉजी। इट इज स्टडी ऑफ हाउ अदर्स इन्फ्लुएंस आवर थॉट्स, फीलिंग्स एंड एक्शंस। और सोशल साइकोलॉजी के बिग लेसन्स क्या हैं। वी कंस्ट्रक्ट अवर सोशल रियलिटी, अवर सोशल intuitions are often powerful but sometimes perilous. Social influences shape our behavior. Personal attitudes and dispositions also shape behavior. Social behavior is biologically rooted as well. जैसे biologically aspect जो हर behavior में apply होता है, उस तरह social behavior में भी होता है. Its social psychology's principles are applicable to everyday life and other disciplines. According to the attribution theory, tendency to give a casual explanation for someone's behavior often by crediting either the situation or the person's disposition. In social psychology, attribution theory के मुताबिक किसी बिहेवियर की कॉज को एक्सप्लेन करना, किसी दूसरे के बिहेवियर की कॉज को एक्सप्लेन करना बेसिकली एट्रीब्यूशन है, एट्रीब्यूट करना। गिविंग कॉज टू समवन्स बिहेवियर इज एक्चुअली attribution. It can be a positive attribution or a negative attribution. So negative behavior जो है वो that is situational attribution. Maybe that driver, for example, कोई गाड़ी ड्राइव कर रहा है और बहुत गंदी ड्राइव कर रहा है, तो आप उसको कह सकते हो, दो रीजंस दे सकते हो उसको। एक तो ये कि वो बहुत बुरा ड्राइवर है, और एक आप उसको कह सकते हो कि मे बी दैट ड्राइवर इज इल। फिर टॉलरेंट रिएक्शन है, इसमें एक सिचुएशनल एट्रीब्यूशन थी। फिर टॉलरेंट रिएक्शन प्रोसीड कैच कॉन्शियसली अलॉ द ड्राइवर अ वाइड बर्थ, और अनफेवरेबल रिएक्शन है स्पीड अप एंड रेस पास द अदर ड्राइवर क्रेनिंग टू गिव अ डर्टी लुक। अच्छा, पहली सिचुएशन अगर होती है तो सिचुएशनल एट्रीब्यूशन में तो आप उसको जो है थोड़ा सा स्पेस देते हो, मगर जो सेकंड सिचुएशन है उसके मुताबिक आप उसको सजा देने की कोशिश करते हो। फिर बिकॉज वी आर गोइंग टूवर्ड्स लाइकिंग एंड फ्रेंडशिप अट्रैक्शन, तो बिफोर दैट वी शुड अंडरस्टैंड दीज काइंड ऑफ थिंग्स विच आर एक्चुअली पार्ट ऑफ सोशल साइकोलॉजी. Social thinking. Our behavior is affected by our inner attitudes as well as by external social influences. Internal attitudes और आपके external attitudes मिलकर आपका behavior बनाते हैं. Then comes आपके social relations, in which we are today studying the liking and attraction और liking and friendship, जो कि basically start होती है by some of your basic जिसको need कह लें, and that starts from a need for belongingness. जैसे आपने you must have remembered that lecture on Maslow की hierarchy, जिसमें हम अपनी primary needs को fulfill करते हैं और फिर हमारी social needs start होती हैं, secondary needs start होती हैं, जिसमें हमारी एक belongingness की need होती है कि we should belong to certain group, we should belong, जो हम socially we want to be acceptable, we want to be part of somebody, someone else, some group,
और these belongingness needs basically drive us, motivate us towards friendship और किसी social group की तरफ हमें मजबूर करता है जाने के लिए. The need to belong is a basic human motive. You have studied it. We care deeply about what others think of us. Those with a network of close social ties tend to be happier, healthier and more satisfied with life than those who are more isolated. This is a very important aspect. You must be knowing about it because all these things exist in yourself as well. Ostracism, it is acts of excluding or ignoring. We don't like it. Often used as social punishment, leads to multiple negative outcomes including self-defeating behaviors and inability to regulate behavior and aggression. So need for affiliation is another need. It is a desire to establish social contact with others. We are motivated to establish and maintain an optimum balance of social contact. Benefits of affiliation क्या होते हैं कि हम सेंस ऑफ अटैचमेंट फील करते हैं, हम सोशल इंटीग्रेशन फील करते हैं, रीएश्योरेंस ऑफ वर्थ फील करते हैं, वी फील आवरसेल्फ वर्थवाइल और वी हैव अ सेंस ऑफ रिलायबल अलायंस एंड वी आर गाइडेड और वी नीड सम गाइडेंस. Factors which are involved in interpersonal attraction, familiarity being there, who are we most likely to become attracted to. Two basic and necessary factors in the attraction process, proximity होती है और exposure होता है. Let's see what is proximity and exposure. Proximity is the physical closeness of two people. It is the single best predictor of the development of a social relationship. More likely to know our neighbors than people 10 blocks away. What about recent technological advancements? Okay, इसका जवाब दें आप लोग. देखें, प्रॉक्सिमिटी लॉ के मुताबिक हमने गेस्टॉल्ट के लॉज पढ़े थे ना कि जो चीज़ें करीब होती हैं वो परसीव करना आसान होता है और जो चीज़ें ग्रुप में होती हैं. सिमिलरली अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉक्सिमिटी जो कि सोशल साइकोलॉजी में हमारी रीज़न बन रही है इंटरपर्सनल लाइकिंग की या अट्रैक्शन की, दैट इज़ बेसिकली द प्रॉक्सिमिटी, द क्लोजनेस ऑफ टू पीपल. अगर मेरे साथ आके क्लासरूम में कोई बैठता है, आप अपने क्लासरूम में बैठे हैं इस वक्त, तो आपके ज़्यादा चांसेस हैं कि आप अपने इसी क्लासरूम में दोस्ती कर लें रादर देन गोइंग अवे इन अनदर डिपार्टमेंट और उस डिपार्टमेंट में आपकी दोस्ती हो जाए. तो करीब बैठे हुए लोगों की आसानी से दोस्ती हो जाती है बिकॉज देयर इज़ अ लॉ बिहाइंड इट कि आपका जो आपने उस पे इस रिलेशनशिप पे जो कॉस्ट लगाई है दैट इज़ लेस देन द जो उसका आउटकम हुआ है, जो उसका प्रॉफिट हुआ है. फॉर एग्जांपल कॉस्ट क्या लगेगी? अगर आपने दोस्ती की किसी 2 ब्लॉक्स हट के 3-4 ब्लॉक्स दूर जाना पड़े आपको और आपके करीब बैठे हुए शख्स से आपकी दोस्ती हो सकती है, तो आप प्रेफर करेंगे करीब बैठे हुए शख्स से, क्योंकि दूर जाने में आपकी कॉस्ट लग रही है इन टर्म्स ऑफ योर एंजाइटी, इन टर्म्स ऑफ योर गोइंग देयर, इन टर्म्स ऑफ योर एनर्जी. सो इट इज़ मच बेटर कि आप अपने प्रॉक्सिमिटी के मुताबिक करीब तरीन चीज़ों में अपनी दोस्ती या अट्रैक्शन तलाश कर लेते हैं. सो व्हाट अबाउट रीसेंट टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट? ऑफ कोर्स के हमारे लिए आसान हो गया है किसी से रिलेशन रखना और बातचीत करना, बट ऑफ कोर्स फिजिकल प्रेजेंस इज आल्सो इम्पॉर्टेंट फैक्टर. The person who is living next door to you, according to this proximity, few researchers have tracked friendship formation among the couples in various apartment buildings. Residents had been assigned to their apartments at random. Most were strangers when they moved in. The researchers asked the residents to name their 3 closest friends in the entire housing project. Just as the proximity effect would predict, 65% of the friends mentioned lived in the same building, even though the other buildings were not far away. तो इतनी दूर नहीं थी, लेकिन उन्होंने ज़्यादातर ने उसी बिल्डिंग में से अपनी दोस्ती का इजहार किया. Factors involved in interpersonal attraction में mere exposure is another factor. Contrary to folk wisdom, familiarity does not breed contempt. The more often we are exposed to a stimulus, the more we come to like that stimulus. Familiarity can influence our self-evaluations.
आप किसी से फेमिलियर होते हैं ना, और आप जितना ज़्यादा उससे मिल रहे हैं, दैट इज़ अनदर फैक्टर कि आपका एक्सपोजर जिससे ज़्यादा होगा, आपका ज़्यादा चांसेस हैं कि आप उसमें अट्रैक्ट हों या उससे आपकी दोस्ती हो जाए. If we simply recognize a brand, we will judge it more positively. Researchers asked about to pick which of two airlines to fly on, one familiar one or one unfamiliar one. So people overwhelmingly choose the familiar one. Even after adding 3 troubling pieces of information such as accident, 67% still choose the familiar company. One goal of advertising is to blitz us with a name so many times that it unconsciously triggers the recognition heuristic. Children definitely prefer the taste of food in McDonald's wrappers over the same food in plain wrappers. अब जिस चीज़ का नाम को आप जानते हैं, आप उसके फेमिलियरिटी की वजह से आप उसकी जानिब जाएंगे, चाहे लोग उसके बारे में बहुत कुछ भी कह रहे हों. लेकिन ज़्यादातर ये कहा गया है कि अनफेमिलियर एनवायरनमेंट में लोग जो हैं वो नहीं जाना चाहते. सिमिलरली अनफेमिलियर लोगों से, अनफेमिलियर लोग, स्ट्रेंजर्स से प्रेफर करेंगे हम ज़्यादा उन लोगों को जिनको कि हम डेली देखते हैं और डेली हमारे सामने होते हैं. तो हमसे अगर कहा जाए कि किस चीज़ को चूज़ किया जाएगा, तो हम मोस्ट जो है कॉमनली हम उन चीज़ों को चूज़ करते हैं अकॉर्डिंग टू द रिसर्चेस जो कि हमसे फेमिलियर होती हैं. Now the factors which are involved in interpersonal attraction, that is one of the factors is these are all research areas in which one is the physical attractiveness. We react more favorably to others who are physically attractive than to those who are not, but depending on how we perceive this word physically attractive. We all have our own definitions of physically attractive word. So this is a bias for beauty is pervasive actually. Is beauty an objective quality? क्या ये physical attraction होना is a objective quality? Some argue that certain faces are inherently more attractive than others. High levels of agreement for facial ratings across ages and cultures. Physical features of the face are reliably associated with judgment of attractiveness. Babies prefer faces considered attractive by adults. Learning की इसमें aspect आ गया ना. Is beauty a subjective quality? People from different cultures enhance their beauty in very different ways. Ideal body shapes vary across cultures as well as among racial groups within a culture. Standards of beauty change over time. Situational factors can influence judgments of beauty. Why are we blinded by beauty? Inherently rewarding to be in the company of people who are aesthetically appealing. This can be one of the factor. Possible intrinsic and extrinsic rewards, and कुछ ना कुछ आपको rewards मिल रहे हैं, या apparently या internally आप कुछ समझ रहे हैं कि this is rewarding to sit in a beautiful company as per your beauty definition. Tendency to associate physical attractiveness with other desirable qualities. What is beautiful is good stereotype. ये अभी हमने stereotype discuss किया है ना, तो what is beautiful, this is all depending on your thinking pattern. What you think is beautiful, you are attracted towards that. Physical attraction stereotype is basically people within a culture assume that attractive people have the traits that are valued by that culture. Adults and children are biased towards attractive people. Even infants stare at attractive people longer than unattractive people. Lessons begin early. How many ugly heroes are there in children's tales versus the number of ugly villains? So कहाँ से शुरू हुआ? Learning ना, learning से शुरू हुआ. शुरू से मीडिया आपका इसमें इन्वॉल्व है, आपकी रीडिंग, स्टोरी बुक्स, बच्चों को आपने शुरू से एक हीरो का जो कॉन्सेप्ट दिया, दैट शुड बी अ ब्यूटीफुल पर्सन. तो ब्यूटी का एक कॉन्सेप्ट जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, हम उसी को लेके आगे चलते हैं. ब्यूटी का जो भी कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट कर रहा है. Now the factors which are involved in interpersonal attraction, one is the similarity factor. Proximity increases the familiarity, जैसे कि अभी बात की हमने, which leads to liking, but something more is needed to fuel a growing friendship. That fuel is similarity, a match between our interests, attitudes, values, background or personality and those of another person. There should be a something similar. अब आप अपने आप को देखें, आपके जो दोस्त हैं मोस्टली, आप अगर गौर करें तो कोई ना कोई चीज़ ऐसी है जो आप में और उसमें सिमिलर है. नॉट
always in the overt behavior, नजर आने वाले behavior में नहीं, but sometimes internally inside some thinking pattern that is similar between you and your friend, if you just judge your own personalities. 3 areas of similarity that increase the likeness: demographic similarity, attitudes and values, and personality. So demographic similarity भी हो सकती है कि you are living in a same area, same culture, same background. Attitudes or values are also same, and the personality are having these few similar things that are cognitive complexities. एक जैसा mental intellect level आप लोगों का है, similar emotional styles हैं आपके, maybe attachment styles भी same हैं आपके. So this can be a reason why you are attracted or you are making a certain kind of friend. The more similar to ourselves we find someone to be, the more we tend to like them. Friends more like to share opinions, attitudes, beliefs and values. Dissimilarity breeds dislike in an even stronger fashion than similarity breeds liking. Now the other thing is the reciprocal liking. Similarity के बाद जो reciprocal liking है, one of the most potent determinants of our liking someone is if we believe that that person likes us, it's a reciprocal liking. Reciprocal liking effects can only occur if we like ourselves. People with negative self-concepts tend to be skeptical that others actually do like them and therefore may not reciprocate liking. Reciprocal liking can come about because of self-fulfilling prophecy. People with a negative self-concept respond quite differently. अब self-concept आप पढ़ चुके, अब अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं अपने lectures में, आपके लिए बहुत सारी जो terminology है that is not new now. So such people indicate that they have preferred to meet and talk to a person they know has criticized them earlier than meet and talk to a person they know has praised them earlier, right? Thus, if people think of themselves as unlikable, another person's friendly behavior toward them will seem unwarranted and they may not respond, setting in motion another self-fulfilling prophecy. Now comes the theories of liking and attraction. What are the theories behind liking and friendship or attraction? There might be 3 basic theories we will be discussing today: the exchange theory, equity theory, gain-loss theory. Let's see what is exchange theory. Now, as the name is indicating you that exchange theory is basically there must be something which is exchanging in a form of cost, reward or outcome or something like that. The main idea behind social exchange is everyone tries to maximize the rewards they obtain from a relationship and try to minimize the कॉस्ट. अब आपने सिमिलैरिटी भी पढ़ ली और आपने ये भी पढ़ लिया कि वो कौन सी चीज़ें हैं प्रॉक्सिमिटी में, वो क्या चीज़ें हैं कि जो कि हमारी कॉस्ट को कम करेंगी अगर हम कोई रिलेशन बनाएंगे. अब ये कोई इकोनॉमिकल टर्म्स नहीं है, मगर हम इकोनॉमिकल टर्म्स में कर रहे हैं. कॉस्ट, रिवॉर्ड, आउटकम, प्रॉफिट, इन सूरत में हम बात कर रहे हैं क्योंकि रिलेशनशिप में वी आर एट द एंड कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली जजिंग दैट हमारा कितनी कॉस्ट लगी और हमें कितना प्रॉफिट हुआ है. तभी रिलेशनशिप स्ट्रेंथन होता है, बिल्ट होता है, फिर स्ट्रेंथन होता है. तो कोई भी रिलेशनशिप में एक्सचेंज इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि एक्सचेंज इन द फॉर्म ऑफ द कॉस्ट इज़ इन द फॉर्म ऑफ पॉसिबल एंजाइटी जो कि हो सकती है आपको कोई भी रिलेशनशिप स्टार्ट करने के लिए, या पॉसिबल फियर ऑफ फीलिंग, या आपकी एनर्जी जो उस पर लग रही है, दैट कैन बी योर कॉस्ट. एंड इन दैट रिटर्न आउटकम की सूरत में आपको ज़्यादा फुलफिलमेंट है, प्लेजर है, कंपनी की एंजॉयमेंट है जिस कंपनी में आप बैठ रहे हैं, तो देन इट इज़ द रिलेशनशिप इज स्ट्रेंथन. सो द मेन आइडिया बिहाइंड इट इज एवरीवन ट्राइज टू मैक्सिमाइज द रिवॉर्ड्स दे ऑब्टेन फ्रॉम अ रिलेशनशिप. आप हर बंदा का ये पर्पस है कि उसको जिस भी रिलेशनशिप में वो है उसमें उसको मैक्सिमम रिवॉर्डिंग रिलेशनशिप हो उसका. और अगर रिवॉर्डिंग नहीं होता तो उस रिलेशनशिप के एग्जिस्ट करने में, उसके कायम रहने में, बाकी रहने में जो है वो प्रॉब्लम्स होती हैं. इट इज़ नॉट देन स्ट्रेंथन और दैट इज समटाइम्स नॉट द रिलेशनशिप इज नॉट नो मोर देयर. इफ द रिलेशनशिप इज टू बी सक्सेसफुल देन बोथ पार्टीज आर एक्सपेक्टेड टू गिव एंड टेक इन इक्वल proportions. In this theory there are 4 basic steps: reward, cost, outcome, comparison, level. Rewards are the positive
gratifying aspects of the relationship that make it worthwhile and reinforcing, which includes the kind of personal characteristics and behaviors of our relationship partner that we have already discussed, and our ability to acquire external resources by virtue of knowing this person. For example, gaining access to money, status, activities or other interesting people. तो मैंने आज तक ये जितने भी लोगों को ये चैप्टर पढ़ाया, ये टॉपिक पढ़ाया है, तो मुझसे हमेशा मेरे स्टूडेंट्स ने ये सवाल किया कि बड़े ही बिजनेस टर्म्स में आपने दोस्ती को एक्सप्लेन किया है, बट एक्चुअली दोस्ती क्यों होती है, आप उसकी रीजंस देखें. ये बिजनेस टर्म्स इस तरह नहीं है, इसमें कोई मनी और पैसे का जिक्र मैं नहीं कर रही, लेकिन कॉस्ट का जिक्र इन फॉर्म ऑफ द थिंग्स यू आर स्पेंडिंग ऑन योर रिलेशनशिप. आप वो कोई भी चीज हो सकती है, वो टाइम भी हो सकता है. आप अपने रिलेशनशिप पे जो भी, चाहे आप अपने दोस्त के साथ जो भी चीज स्पेंड कर रहे हैं, दैट इज एक्चुअली यू आर ऑल्सो एक्सपेक्टिंग समथिंग, यू आर रिक्वायरिंग समथिंग, यू वांट अ रिवॉर्डिंग काइंड ऑफ रिलेशनशिप. एंड इफ इट इज नॉन रिवॉर्डिंग रिलेशनशिप, तो इसका एग्जिस्ट करना मुश्किल हो जाता है. तो रिवॉर्ड इज द की. So rewards are that important. Now the costs are obviously the other side of the coin, and all friendships and romantic kind of relationships have some cost attached to them, such as putting up with someone's annoying habits and characteristics. ये आप cost लगा रहे हैं, but the costs are also the level of anxiety you are feeling for going towards some relationship, के fear of rejection है आपको, या आपको बात करते हुए घबराहट है, या आपको टाइम लगाना पड़ रहा है, या कोई भी ऐसी चीज जो कि आपकी एनर्जी को स्पेंड करवा रही है इन टर्म्स ऑफ ऑल दीज इमोशंस एंड बिहेवियर्स, और इन सब चीज़ों में वो कॉस्ट होती है. आउटकम, इफ द कॉस्ट इज मोर देन रिवॉर्ड, ऑफ कोर्स रिवॉर्ड से ज़्यादा आपकी कॉस्ट लग गई तो वी हैव अ नेगेटिव आउटकम. Then that relationship is not going to exist. If on the other hand there is a profit left over after we have subtracted the cost, we have a positive outcome. So relationship exist करने के chances हैं. अब आप मुझे ये मत कहिएगा कि ये बहुत business terms में आप पढ़ा रही हैं, but in fact this is how exchange theory explains the relationship, and if you apply it on your life you will find that it is very true. Now, people's expectations about the level of reward and punishment they are likely to receive in a particular relationship is a comparison level. ये भी इस थ्योरी का पार्ट बनता है. लेकिन फिर एक थ्योरी आती है जो कि कम बेश ये सारी थ्योरीज मिलजुल के आपकी फ्रेंडशिप और लाइकिंग और अट्रैक्शन को एक्सप्लेन कर रही हैं. एक इक्विटी थ्योरी आती है, जो इक्विटी से मीनिंग है हमारा इक्वल फील करना. फिर वही आउटकम को, या आप रिलेशनशिप में अपने आप को अगर इक्वल बेनिफिट्स उठा रहे हैं दोनों लोग, तो फिर जो है वो रिलेशनशिप रहने का जो है ज़्यादा चांसेस भी हैं, और उस रिलेशनशिप में आपकी जो लेवल ऑफ फ्रेंडशिप है वो एग्जिस्ट करने के चांसेस के अलावा जल्दी फ्रेंडशिप होने के भी वहाँ चांसेस हैं. तो प्रोपोनेंट्स ऑफ इक्विटी थ्योरी डिस्क्राइब इक्विटेबल रिलेशनशिप एज द हैप्पीएस्ट एंड मोस्ट स्टेबल. In comparison, inequitable relationship result in one person feeling that is over benefited, getting a lot of rewards, incurring few costs, having to develop little time or energy to the relationship, or under benefited, getting few rewards, incurring a lot of cost, having to devote a lot of time and energy to the relationship. ये आप दोनों आप टाइप की देख सकते हैं. Now the gain loss theory. Gain and loss. एक्सचेंज थ्योरी पढ़ने के बाद आपको इनके वर्ड से समझ आएगा कि एक गेन और लॉस, इक्विटी, इक्वल लेवल, गेन लॉस में कुछ गेन हो रहा है, कुछ लूज हो रहा है. लेट्स सी व्हाट इज इट. दिस डील्स विद द एरिया ऑफ liking and feedback. According to this theory, changes in another person evaluation of us will have more impact on our liking for him, her than if the evaluation were constant. It's a very important factor. इसका क्या मतलब है कि आपको आज फर्ज करें, आज आप एक किसी से मिलते हैं और आपकी उससे दोस्ती हो जाती है और आप को आहिस्ता आहिस्ता डेली अपने दोस्त से
या जो है इस रिलेशनशिप में डेली एक बड़ा अच्छा फीडबैक मिलता है कि ओ आई लाइक योर बिहेवियर, आई लाइक द वे यू टॉक, I like the way you organize your things, whatever strengths you are possessing, आपको ये feedback आपके इस relationship में आपके friend से मिलता है daily, और उसकी liking का graph daily आपके लिए बढ़ रहा है. ऐसे relationship में you feel more satisfied, you may feel more happy, rather than ये चीज़ constant रहे. इसलिए कहते हैं ना, तारीफें करते रहनी चाहिए, strengths को find out करते रहना चाहिए अगले बंदे की. अगर आप चाहते हैं कि you should be liked by others, then you better possess a quality of taking out the strengths of others as well. Then you will be liked by others. Not only you will be liked by others, you will like other people as well, and this is a very positive trait in you. So आपका जो constant graph है ना, जैसे आपके घर में आप ये देखें कि शुरू से आपके कोई बहन भाई हैं, आपके पेरेंट्स हैं, आपसे वो हमेशा से प्यार करते हैं और बहुत पसंद करते हैं आपको, मगर आपको फिर भी सोसाइटी में मूव करना है, आप हर वक्त घर में नहीं रहते, आपको वो बहुत पसंद करते हैं और कॉन्स्टेंटली पसंद कर रहे हैं, बट यू नीड अ चेंज. यू गो आउट, यू मीट अ फ्रेंड, ऑल्दो आपकी लव नीड, बिलोंगिंग नीड आपके घर में भी शायद पूरी हो रही होगी, लेकिन आप बाहर जाते हो, आप दोस्ती करते हो और आपको अपनी कुछ कंपनीज में बहुत मजा भी आता है. यू जस्ट एंजॉय सिटिंग विद देम. रीजन व्हाई यू आर एंजॉयिंग इज दैट यू आर गेटिंग अ वेरी गुड evaluation of yourself, and that evaluation is daily increasing day by day in a positive manner, rather than that evaluation which you are getting at the home sometimes, which is of course it's always positive for you and everybody loves you, and for example your brother, वो आपको पसंद कर रहा है, वो आपसे दोस्ती भी है, लेकिन उसका एक लेवल है जो कांस्टेंट लेवल है. तो यू गो आउट एंड यू फाइंड सम फ्रेंड, एंड चूंकि वो आपके लिए डिफरेंट है और वो आपके लिए डेली इवैल्यूएशन नई लेकर आ रहा है, नया फीडबैक मिल रहा है और उसका ग्राफ इंक्रीज हो रहा है, रादर देन हैविंग अ कांस्टेंट फीलिंग. सो दैट इज वन ऑफ द रीजन बिहाइंड योर फ्रेंडशिप. And thus we like a person who is esteemed for us increases over time better than someone who has always liked us. A gain situation. You are in a gain situation. आप मुसलसल आपका ग्राफ आगे बढ़ रहा है और आप एक गेन सिचुएशन में हैं. और सिमिलरली हम उस बंदे को ज्यादा डिसलाइक करते हैं जिसका के ग्राफ आपके लिए कांस्टेंट था बनस्बत उसके के वो बंदा जो कि मुसलसल आपको डिसलाइक किए जा रहा है, एक के बाद एक, और डेली इवैल्यूएशन उसकी डिफरेंट होती जा रही है, तो हम उसको ज्यादा डिसलाइक करेंगे रादर देन जो हमेशा से ही हमें नापसंद करता है उसके मुकाबले में. सो वी डिसलाइक अ पर्सन हुज इवैल्यूएशन ऑफ अस बिकम नेगेटिव ओवर टाइम मोर देन समवन हु हैज ऑलवेज डिसलाइक्ड अस. दैट इज अ लॉस सिचुएशन. नाउ द सोशल रिलेशंस, फ्रेंडशिप. व्हाट एक्चुअली अभी आपने ये 3 थेरीज पढ़ी, अब इन 3 थेरीज के नतीजे में हमारे जो रिलेशंस बन रहे हैं उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, दैट इज अ फ्रेंडशिप रिलेशन. So how do we define friendship? It is a reciprocal relationship with positive effect. We are of course going into this relation because it is having positive effect. So it is the only relation in which we are not bound to bound to keep the relation. Friendship में आपको कोई boundness नहीं है. You are going just because of some outcome which is very rewarding and leaving some profit for you. So it is distinct from the popularity. Importance क्या है इसकी? Source of social support है, conflict resolution skills है, preparation for adulthood है, can have bad consequences as well. That depends on the quality of friendship. There are 4 stages of friendship. Now कैसे बनते हैं आप लोग, दोस्त कैसे बनते हैं? दोस्तों में बेसिकली ये अनकॉन्शियस सा एक प्रोसेस है जो आपके साथ हो रहा होता है, और दैट आर बेस्ड ऑन दी 4 stages of friendship. Number 1 is the formative stage, 2 exploratory stage, negotiation stage और commitment stage. Formative stage जैसे नाम से समझ आ रहा है कि आप एक ग्रुप है, इमेजिनरी ग्रुप आप देखें, उसकी फॉर्मेशन होती है. इसको हम इस तरह से करते हैं कि एग्जाम्पल के साथ देखते हैं. Analysis focuses upon the sequence of events and stages that led to the development of friendship. The sequence may be examined as we describe the process of an imaginary group.
A group of students, let's say from various universities, are strangers to each other who are brought together for a weekend conference. देखते हैं क्या हुआ. And in the exploratory research, at the first meeting of the imaginary group, the students who are attending the conference look each other and engage in a process termed as sampling and estimation. Each person explores a varying degree of cost to him or herself and the rewards available in potential relations with other persons around the room. हर शख्स अपने तौर पे एक्सप्लोर करता है अनकॉन्शियसली ही सही कि उसको किसके साथ एक्सप्लोर कर रहा है ना वो, कि उसको किसके साथ बैठने में ज़्यादा मज़ा आएगा, उसको कहाँ बैठना चाहिए, किस तरफ जाना चाहिए, किस ग्रुप में किस जगह पर अपने आप को रिलेट करना चाहिए. फिर एक प्रोसेस आता है बार्गेनिंग का या निगोशिएट करने का. निगोशिएट करना इज़ अनकॉन्शियस प्रोसेस एंड दिस प्रोसेस इज़ नॉट एट ऑल रैशनल इवन. Each person makes evaluations and attempts to negotiate a definition of the situation and of the resultant relationship that will maximize the outputs. In parts, such attempts take the form of strategies. फिर आपकी last stage of friendship है, that is commitment. After negotiation, that was an unconscious process. Then you commit. Then you stop looking here and there. You just commit and you sit with the members of prayer, progressively reduce their sampling and bargaining with the other person. They stop looking around the room, stop thinking about other possibilities and commit themselves to a particular other person. So they find a state that is called as institutionalization या commitment. And now you are not looking around your room, but you are committed to one person. So now you must have seen how through these different theories and the friendship stages we are making and we are belonging to certain groups. So let's see कि हमारा क्या स्टाइल है फ्रेंडशिप का. आप इस आपका असाइनमेंट ये है कि आप जस्ट सी योरसेल्फ, फाइंड आउट योर क्वालिटीज़, फाइंड द क्वालिटीज़ इन योर फ्रेंड्स के वो कौन सी ऐसी कॉमन क्वालिटीज़ हैं जो आपके दोस्तों में हैं, एंड जस्ट लुक एट योरसेल्फ एंड सी कि आपका फ्रेंडशिप स्टाइल क्या है और कौन से फ्रेंड्स हैं, कौन से रिलेशंस में यू आर फॉलोइंग द इक्विटी थ्योरी, एक्सचेंज थ्योरी, गेन लॉस थ्योरी. और गेन लॉस थ्योरी के मुताबिक आप नए फ्रेंड्स बनाते हैं और उन नए फ्रेंड्स में आप देखिएगा कि इनिशियल डेज ऑफ फ्रेंडशिप बड़े एक्साइटेड होते हैं कि यू फील लाइक यू आर गेनिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स डेली ऑन डेली बेसिस. तो इसलिए रिलेशनशिप हमेशा मेंटेन करने के लिए, फ्रेंडशिप कायम रखने के लिए, द इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट कीप एन आई ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ अदर पीपल, कीप एन आई ऑन दिस, एंड दैट इज नॉट अ उसमें कोई मुबालगा नहीं होता. That is a fact that everybody is having some strengths, and if you are the person who is identifying that strength, then you are successful in making and keeping the relations. So better be very positive with your relations so that you will find a very positive attitude from other side. This is all about friendship, and this is all about liking, why we like people according to different theories. There are something similar, there are something which follows the proximity laws, and why we are attracted to some kind of people because of there is one reason, that is our definition of beauty. Due to the physical attractiveness we might be attractive towards something. Some people we are attracted towards competency as well, but it has been seen that जो दोस्तियाँ होती है ना उसमें competency sometimes एक बहुत competent person जब बड़े आराम से agree करता है अपनी incompetency को, तो that is a more attractive thing according to a research rather than a competent person without doing any blunders. A person who is doing blunders is more attractive to other people, जो कि नॉर्मल लाइफ के ब्लंडर्स छोटे छोटे होते हैं बट स्टिल नॉलेजेबल है और कॉम्पिटेंट है. पर अब कॉम्पिटेंट पर जैसे कि हम कहते हैं ना एंजल्स, सो रिसर्चर्स हैव शोन दैट वी आर नॉट अट्रैक्टेड टूवर्ड्स एंजल्स, वी आर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स ह्यूमन बींग्स. इट्स नॉट कि वो बिल्कुल गलतियां नहीं कर रहा एक इंसान और हम फिर भी उससे जो है वो हम उससे इम्प्रेस हो सकते हैं, बट वी आर नॉट एक्चुअली
मेकिंग अ रिलेशनशिप विद दैट पर्सन। जैसे कि टीवी पर देखते हैं आप, यू कैन अट्रैक्ट टूवर्ड्स सम काइंड ऑफ सम पीपल, मॉडल्स की तरफ आप अट्रैक्ट हो सकते हैं, उनकी गुफ्तगू और आपकी गुफ्तगू, उनकी गुफ्तगू जब आप सुनते हैं तो यू आर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स दैट स्पीच, बट इट्स नॉट नेसेसरी कि चूंकि कि वो आप उनसे दोस्ती के बारे में सोचें। दोस्ती आप अपनी कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से किसी से करते हैं, और ये उसकी स्टेजेस हैं जो अभी हमने डिस्क्राइब किए हैं आपको, एक इमेजिनरी ग्रुप को आपके जहन में लाके, और आप उसकी दोस्ती को स्टेजेस को सामने रखें और फिर देखें कि आप किस तरह से इन स्टेजेस को फॉलो कर रहे हैं। एंड आई एम श्योर दैट यू आर फॉलोइंग many of these things, और यही स्टडीज और यही थेरीज जो हैं ये आपके काम आएंगी आपकी सेल्फ अवेयरनेस के लिए, और यू मस्ट बी नोइंग व्हाट actually is going on with you, and then you will be knowing about others as well.